Okay, we are discussing about uh, the common neonatal problems, and the last class we have covered up to physiological jaundice. My voice is audible there? Yes, sir. Okay. So now physiological jaundice, everybody knows. This is one of the common physiological manifestation which happens in the neonate. No need to explain much more about this. Everybody knows. And there are different causes for physiological jaundice. One of the causes is immaturity of the liver. Liver is not able to handle extra amount of the destroyed RBCs as it is very immature, and there is less formation of glucuronidase transferase enzyme, and which is unable to do the conjugation, and as a result the amount of unconjugated bilirubin will go into rise in the blood, and that leads to physiological jaundice. The extra amount of the extra destruction of the RBCs is because of the over destruction of the fetal RBCs. Fetal RBCs are present in the fetal life. Now they has to be destroyed, and a new type of adult RBCs should be formed, and that's the reason why there is extra destruction of the RBCs. But as the liver is immature, and due to some other causes like enterohepatic recirculation and many things, immaturity, etc., so liver is not able to handle it, and that leads to physiological jaundice. That's all. Now, what should be understood in the physiological jaundice is it should be differentiated from other types of jaundice. Jaundice occurring on the first day, jaundice occurring on the second day is always considered as pathological. Jaundice occurring from third day onwards is considered as physiological. Okay, first day jaundice we have a different causes, second day jaundice we have different causes. But sometime in case of low birth weight babies and the premature babies or preterm babies, the jaundice, physiological jaundice may even start on second day. Now usually it starts from the third day and it go on increasing. That's the nature of the physiological jaundice. As the day passes, it go on increases and it reaches the peak by almost 10th day. Okay, 10th day onwards slowly start going on decreasing, and by the end of the second week almost all it comes to the normal level. So this is how it rises and get into the peak and they again come back to the normal. This particular pattern should be observed in a child with physiological jaundice. If this pattern is seen, then it is physiological jaundice. Otherwise, we should suspect for some other causes of pathological jaundice. That's number one. Number two is Kramer's criteria, everybody knows, and the physical estimation of the bilirubin, that can be tried. And third one is you have to look at the baby. Usually in physiological jaundice, what happens is baby is always active. Okay, although there is high rise of bilirubin, more than up to 16, okay, up to 16 milligrams per deciliter, still the baby is very active, baby is taking the feed, baby is playful, and baby is growing well with the increase in the daily weight gain. So this is how usually we differentiate physiological jaundice clinically. Okay, so therefore clinical estimation is very important. Otherwise we go on taking the blood of the baby for estimation of the bilirubin. Of course nowadays bilirubinometer like different devices are also available, but still, so it's unnecessary waste of time and also waste of the energy and waste of the blood of the baby also, because blood of the baby is also very precious. Because how much blood will be there? Again, 80 ml per kg of the blood will be there. So you should not. So if you remove about 5 ml, 10 ml of the blood from the newborn baby, almost 10% the blood volume will go into decrease. Therefore, we should be always careful in this regard also. Anyway, so this is how you have to identify. If the jaundice persists for more than 15 days also, more than 2 weeks also, then it is called as prolonged jaundice, and we have got different set of disorders which cause prolonged jaundice, like breast milk jaundice, hypothyroidism, etc. Okay, so this is one of the basic thing about the physiological jaundice. It is physiological, and how to understand? Baby will be normal. That's very important. In spite of all the raising jaundice, the baby is looking normal, active, feeding well, growing well. Then what is needed? That's physiological jaundice. Okay. Now, second is method of examination. Method of examination, Kramer's criteria is most commonly used. We know that, and other methods you can go for blood investigations, etc. Then why this occurs? This also I have explained, because of excess destruction of the fetal RBCs, as immediately after birth, the body of the baby produces its own RBCs, adult type of HbA type of
RBCs. And see, fetal RBC is having one problem. Fetal RBC has got a extra capacity of carrying oxygenation. Okay, it has got a tremendous capacity of carrying oxygen, and this is needed when the baby is in the fetal stage. Fetal stage, it has to receive oxygen from the mother's side, so it will try to attract maximum oxygen from the mother's side, and that is a requirement. But after birth, this fetal RBC is not required; it has to be destroyed. If after RBC, after birth also, if the fetal RBCs are persisting, that may lead to so many problems. Okay, because there will be so-called hypoxia in the blood, because this fetal RBC is taking more oxygen. Now the baby is breathing independently. It is taking more oxygen. That leads to hypoxia in the blood. Hypoxia leads to erythropoiesis in the kidney. So like this, the sequelae of changes starts. That's a different. Therefore, the body undergoes the destruction of the fetal RBC and new RBCs will be formed. Okay. Physiological jaundice can be sometimes exaggerated by different conditions. Okay. It can be exaggerated by different conditions. One of the is breastfeeding jaundice. Breastfeeding jaundice means if the baby is exclusively breastfed, then what happens is sometimes the fat content which is present in the breast milk sometimes block the production of glucuronidase enzyme, so that conjugation will be delayed, and there will be development of a jaundice. Sometimes enterohepatic recirculation occur. What do you mean by enterohepatic recirculation? Now bilirubin is now converted into conjugated bilirubin by the liver, and it is now excreted into the intestine. Now in the intestine, it has to be processed. Intestine has to divide it, and that means handle it, and some portion is converted into urobilinogen and some portion is converted into stercobilinogen. So now what happens sometimes, if the intestine is immature, it is quite obvious in the newborn baby, intestine is also immature, then it is not able to do this conversion, and whatever converted conjugated bilirubin is there, that is again taken back into the liver and get converted back into unconjugated bilirubin. Got the point? ये जो bilirubin है एक बार ऑलरेडी कॉन्जुगेट होके जो इंटेस्टाइन में आया, और इंटेस्टाइन में जो है वो इमेच्योर होने की वजह से वो वापस जो है कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड कन्वर्ट होके वापस लिवर में जाएगा. So this is called as enterohepatic recirculation. This is also one of the most common cause of triggering of physiological jaundice. So this can also occur. Okay, so when we should alert, physiological jaundice में हमें alert कब रहना है? If the baby is not active, if the baby is not passing the stool, if the baby is not feeding well, if the baby is dull, then we have to be very, very active. Then by Kramer's criteria, you keep on checking the level of the jaundice. And if the baby is having some problems like umbilical sepsis is there, okay, or if the baby is having dull face or dull look, and refusal to feed is there, if all these problems are there, then probably you have to be alert. Okay, it's not level of bilirubin which has to bother. It is the activity of the child. Okay, activity and general condition of the child we have to focus more. Okay, sometimes level may even reach up to 20 also. One of the condition is breast milk jaundice, where level reaches up to 20 also. Okay, so of course it's a normal condition again. Just withhold the breast milk for 1 or 2 days, the condition will resolve. Okay, of course breast milk should not be withheld anywhere at any point of time, because it gives a wrong message to the mother. Okay, my breast milk itself is harmful to my baby. This message will be given to the mother, and that may hinder the further breastfeeding methods. Okay, breastfeeding schedule. Anyway, now what are the benefits? Now, yes, one of the benefit of this physiological jaundice, it is actually one of the boon given by the God to the child. Okay, because this bilirubin will act as an antioxidant. Okay, bilirubin acts as an antioxidant. So now production of this bilirubin is also quite useful to the baby. It prevents the oxidative injuries in the early part of the life. Okay, bilirubin which is present in the blood in excess amount for first 15 days, that act as an antioxidant and prevent all free radical types of injuries. Okay, so therefore it is not so bad. But extra amount of bilirubin, when it is there, it may reach to the brain also sometime and cross the blood-brain barrier and may stay in the basal ganglia and may cause kernicterus. That's a different issue. Okay, so that's usually occurs in pathological jaundice, not in physiological jaundice. So this is about the physiological jaundice. Now, what to do? That treatment part we will not do. One of the best treatment is sun
sunlight treatment. Okay, exposure to sunlight, that is also good. And why we have to expose to the sunlight, and there are different references are there in the Vedic literature. Atharva Veda, there is a reference that Surya Rashmi Chikitsa has been mentioned. Then we can go for some of the hepatoprotective drugs to increase the maturity of the liver, so support the liver. More liquid has to be given so that the conjugated bilirubin will be excreted. Previously, they were giving some drugs like phenobarbital. Now it is not given; it's totally contraindicated. Then some of the drugs like amalaki, bhumi amalaki, etc., given, which are liver stabilizing drug or liver supportive drugs, yakrut uttejaka drugs. Phototherapy, we know that we usually give it. Okay, so pattern one is very important. As a clinician, you have to observe the general conditions of the baby and the pattern of development of these jaundice. Jaundice go on very slowly increasing from third day onwards, it reaches the peak, then again come down. So that suggests nothing to worry. It's a physiological jaundice. Now one more clinical problem in case of newborn is hiccup. Okay, usually mother comes to you, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जो हिचकी कर रहे हैं, hiccup ज़्यादा आ रहा है, क्या करेंगे? Okay, so development of hiccup is a very good news. Why? Because अगर बच्चा हिकअप कर रहा है, हिक्का आ रहा है बच्चे को, सो दैट सजेस्ट दैट द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर वेल डेवलप्ड इन दिस चाइल्ड. ये बच्चे में जो है जितना भी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है, ऑटोनॉमिक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है, दैट इज वेल डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल द रिफ्लेक्स, द कफ रिफ्लेक्स, हिकअप रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स. ओके, दीज आर ऑल गुड थिंग टू द बेबी बिकॉज नाउ देयर इज नो चांस ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल एंटरिंग इनसाइड बिकॉज चाइल्ड्स reflex activity has been initiated. So presence of the hiccup suggests that. So now child is showing some sensitivity against some of the antigens or chemicals or gas, etc. Okay, so it's a good news. So just you assure the mother it's not any nasal congestion or upper respiratory tract infection like that. Hiccup is a good sign. Okay, so now sometime hiccup may start in the newborn baby because after giving the feed to the baby, the stomach will usually get distended because the capacity of the newborn baby is very less, 35 ml only stomach capacity in the beginning part, and later it goes on increasing. And sometimes this distended stomach may cause some irritation to the diaphragm C3 C4 phrenic nerve, so that is supplied by the phrenic nerve, and it may be sometime get irritated, and as a result there may be hiccup. Okay, so again this is one of the most common cause. So whatever mother is bothering about the hiccup, it may be just simply because of distended stomach after giving the feed. Okay, now usually mother also come with the cough. She says usually newborn cannot develop any cough, it's a wrong notion. Okay, now cough reflex is actually basically very coordinated reflex. Okay, it requires the coordination of so many muscles, then central nervous system, respiratory muscles, diaphragm, etc., abdominal pressure, many things are. So a newborn baby is not able to coordinate so much of things because his brain is not so mature. So what we say, the usually adult type of cough, that will not be seen in the newborns, okay, even in the infants to some extent. Okay, so if really this type of cough is present, then it has to be taken seriously, but usually it is not that. Usually any type of sound which is coming from the upper respiratory tract is confused as cough by the mother. For mother, cough means any sound which is coming from the mouth and upper respiratory tract. It may be because of rapid flow of the air, sometimes grunting like, sometimes strider like movements. So any sound is usually confused as a cough. Sometimes even the enlarged thymus gland may also compress the trachea, and it may also lead to some sort of some type of sounds, and all these are confused as all these factors are considered as cough by the mother, which you have to rectify. Okay, and you have to educate the mother regarding this factor. Okay, now another one is jittery baby. This is one more problem in the newborn. Again, it's a physiological problem. Jitteriness, we will call it as jitteriness. Okay, so jitteriness or tremulous on touch or handling, so that's called as jitteriness. Now jitteriness is a seizure mimic. Look, देखने में सीजर जैसा लगता है, but वो सीजर नहीं है. It is one of the seizure mimic. न्यूबॉर्न का जो है सीजर मिमिक्स है, ठीक है, और जो है सटल सीजर जैसा लगता है कभी कभी, but it is not seizure. It's a jitteriness. Jitteriness is basically it is a response to loud noise and response to cold or heat, etc. Okay, or rough handling, etc.
So suddenly what happens? It is easily started by the loud noise and bright light sometime or rough handling, etc. Okay, and it is not because of abnormal electrical discharge which is taking place. This is the sensitivity of the baby against all these things. Okay, so jitteriness is also called as tremulous or jitteriness is quite common in baby. Usually in hypothermia it do occurs. Okay, so how to differentiate it from the tremors and other convulsion like conditions? Very simple. By passive movement, by giving the passive movement of the limb, the jitteriness will go into disappear. Suppose if the limb is shaking now, showing tremor like condition, just passively move the limb for 1 or 2 times, then or hold the limb for some time by your hand, then for few seconds, sometimes it's few seconds, then the jitteriness will stop, and this is called as a jitteriness. Okay, passive movements will go into decrease it or subside it. Okay, so usually it is less during the breastfeeding. This is less during the breastfeeding infant. Diabetic infants, it is more commonly seen. Infant mother born to the infant born to the diabetic mother, this particular jitteriness is commonly seen. Of course, this is self-limiting, and within 48 hours, usually it will go into subside. Okay, because temperature is very less outside compared to the uterine temperature. Uterine temperature is almost 5 degree greater than the outside temperature. So baby is coming suddenly from the high temperature area to the low temperature area. Now it takes some time to get adjust, and during this time, as the brain is immature, it is not able to handle this temperature maintenance program very that means up to the mark. So such type of the jitteriness will be seen because of this. It's very simple. Just give the passive movement and hold the baby. The jitteriness will subside. If it is not subsiding, it is not jitteriness. It can be some other problems. Okay, so this problem, for example, jitteriness should not be given with any sedatives or anticonvulsant drug. Okay, so that should meaning is you should not be over treating the child. So you should not over treat the child. It's always dangerous. Always wait. Many times, although it is a convulsion in the newborn baby, suppose it's not jitteriness convulsion, but convulsion may be because of electrolyte imbalance. Okay, because electrolyte imbalance is also common in baby. So just wait before giving any anticonvulsant. Anticonvulsants are the last choice. Okay. Now this is another problem. Mother usually comes to you by telling that, see doctor, my child has got high fever. He has high fever. Okay. And you are also touching the baby. Yes, it is having very hot body. Okay. Now this is called as a dehydration fever. Okay. This is called as dehydration fever. This is very common in summer months, especially in countries like India, the tropical countries. This is again very common. Okay. So what are the causes? Because the main reason is a water loss. Excess water loss is there, and intake is less. So what actually happens is when the intake is less, inadequate breastfeeding. Now suppose baby was born in the summer month, and feeding is inadequate. So now what happens? There will be a water imbalance. Okay, fluid loss, fluid imbalance will be there. Less fluid will be taken. So this is one of the causes. In the first few days, usually baby has got inadequate breastfeeding. Added by the summer months again, so this particular problem will go into exaggerate or precipitate. Number one. Number two, improper heat mechanism of the newborn. Again, the brain is immature. Temperature regulating system, which is present in the medulla oblongata and all those things, that is not working up to the mark. So therefore, it is not prompt in maintaining the temperature. So this may lead to dehydration fever because of an extra feeling of hotness of the body. But very important, even in dehydration fever is, baby is very hot just like fever, but in spite of that, baby is active and baby is playing. Okay. But head portion, okay, scalp area or head portion is very hot. And extremities are not too hot, but head is very hot. That means scalp and head neck area, upper part, that's very hot. Okay, that's the cause. This clearly suggests that this is a dehydration fever and it is not a fever, or even not it is any other infections. So usually mother says, I have given some crocin syrup or an antipyretic syrup, but still it is not relieved. This is a typical character of this dehydration fever. Dehydration fever cause is a fluid imbalance. Okay, you have to supplement the fluid, then only it will go to come down. Okay, by giving the antipyretics, it is not at all the requirement.
Okay, because it is not an infective fever or something like that. Okay, so therefore dehydration fever, which is quite common. बहुत बार आप आते हैं समर मंथ में ना, बच्चे को सर बच्चे को फीवर है, बच्चे को फीवर है, बच्चे को फीवर है बोल के आते हैं, ठीक है, और लिखते भी आप बहुत सारे चीज. इट्स नॉट फीवर. In summer month already it is dehydration fever. What you have to do is, one is correct the feeding technique and give the adequate amount of the breastfeeding, number one. Number two, if the baby is covered by so many blankets and all, or remove it all and keep the baby under the fan. Okay, थोड़ा बहुत वेंटिलेशन आ जाए तो ये जो फीवर है अपने आप सही हो जाएगा. ठीक है. Thing is, baby is very active, but still it is very hot, and this is typically nothing but dehydration fever. Okay, especially in northern India, in summer month it is very hot, and we are frequently getting such cases. So in this condition, do not expose the baby to the sunlight. Console the mother. Okay, and just remove the tight, thick clothes upon which the baby has been wrapped. Give excess amount of the fluid. Check the feeding again. All these are the things. Okay. Now one more complaint of the mother is, doctor, my baby is crying so much. मेरा बच्चा बहुत रो रहा है. Sir, क्या करेंगे? So when baby cries, first slide we have seen why baby cries and what are the causes and how to differentiate it. वो सब हम देख चुके हैं. Apart from that, if the baby is crying, there are so many other conditions also. एक तो मैंने बता दिया. For the first few days baby cries because of in utero pattern, isn't it? वो तो आपने समझ लिया. In utero pattern. Then less feeding during night. रात में बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है, because usually feeding is get affected in the night hours. Daytime mother is also awakened and mostly she is prompt in giving the feeding, but usually nighttime feeding is get affected as mother is also taking rest to some extent, but baby is active during the night in the first 1 or 2 months. So nobody is talking, everybody is sleeping, baby also get bored and baby start now crying. It's also having sense of insecurity. So another one is in the night hours what happens is everything is cool, कोई साउंड वगैरह नहीं है, ठीक है, सब कुछ कूल रहता है, तो क्या है कि बच्चा थोड़ा बहुत रोता है तो भी उसका परसेप्शन ज़्यादा होता है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, ठीक है. देन यूरिनेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज आई टोल्ड, इवन एट द नाइट आवर्स, ठीक है. मदर इज ऑन वेरी वेरी स्लीपी आइज एंड शी विल नॉट गोइंग टू सी द व्हाट यू से द urination, and most of the time it is mistaken. Most of the time, most common cause of crying at the night hour is also urination of the baby. Okay, then hard stool. Yes, this is one of the cause. Hard stool. जब बच्चा constipation है, बच्चा 2-3 दिन से पास नहीं किया stool, ठीक है. So this is gives a sense of discomfort to the child and baby may have this problem. ठीक है, baby may cry. एक बार stool पास करने के बाद बच्चा relax होता है, उसके बाद cry बंद हो जाता है. Abdominal colic is one of the cause. Why it happens, we have seen. Otitis media, another important cause. Okay, intractable crying, another important cause, that also we have seen. Now one more condition where mother comes to you is why the eyes of the babies are so sticky. मेरा बच्चे का जो ये eyes है ये बहुत sticky है ना, ये पूरा चिपक जाता है, ठीक है. This is one of the most common complaint again by the mother. Sticky eyes without any watery discharge. Usually कोई भी discharge वगैरह ऐसा नहीं है, but sticky eyes है. Okay, so this is quite common again, so nothing to worry about it. If the sticky eyes are there with a purulent discharge, then you have to be worried. Okay, if simply there is no any discharge, simply sticky eyes are there, so that is also quite common. Okay, this should be cleaned with the sterile cotton swabs soaked with the saline water, or you can even use the Danyaka Hima like medication. And a very simple thing is installation of the colostrum. The colostrum, take 1 or 2 drops of the colostrum of the mother and put it over the both eyes, 1 drop. Okay, so now because colostrum or the breast milk of the mother contains so many immunological substances, you know, antiviral, antibacterial factors, so many immunological, IgG, IgM, everything is there. So this will take care of this particular problem. If at all any infections are there, viral any infections are there, this is sufficient to take care. Okay, so this is a very good practice, but afterwards it has to be clean again. Okay, after installation of the colostrum also it has to be cleaned well. Now okay, anyway it has to be done DD with streptococcal infection. Streptococcal infection, you will have purulent discharge, okay, and it has so foul smelling and all, so you find that solution.
Now, oral thrush is one more problem. Sometimes mother may comes to you with the complaints of oral thrush. Oral thrush is more common in bottle feed babies rather than breastfeed babies. Compared to breastfeed babies, in bottle fed babies, oral thrush is very common. And in bottle fed babies, it also leads to the candidial infection because bottle is always a dangerous thing. Bottle is the biggest killer of the baby. Bottle should not be encouraged at any point of time. Okay, so candida infection is quite common, and that may be fungal. Sometimes this fungal infection may also enter inside the stomach, and in the intestine it may cause fungal diarrheas. It's another important point. Okay, so therefore, just avoid bottles. That's all. Sometimes there may be a oral thrush leading to candidiasis, and this may spread to the cheeks and facial area, also leading to the whitish spots on the स्किन. मदर यूजुअली कम ये जो वाइट पैच यहाँ पे आ गया सर ये क्या है ये क्या है, यूजुअली एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है. बट ये फंगल इन्फेक्शन इस टाइप का जो है ओरल हाइजीन को ना मेंटेन करने की वजह से पहले ओरल कैविटी में शुरू होगा और उसके बाद वहाँ से हर जगह में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा. इवन आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो by using a very soothing smooth cloth we have to clean the oral cavity of the baby. ठीक है, एक कपड़े में लेकर कॉटन कपड़े में उसमें थोड़ा गर्म पानी में मिला के हल्का सा वार्म वाटर में मिला के ओरल कैविटी को हमें क्लीन करना चाहिए इवन आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो. Okay, because there is a collection of the milk will be there in the mouth area that may precipitate the fungal infection at any point of time because milk is rich in carbohydrates and all those things. So जो वहाँ पे जो है होगा फर्मेंटेशन होगा, सो बहुत सारी चीज़ होगा. ओके, सो बॉटल में तो पूछो ही मत, बॉटल इज़ वेरी डेंजरस. सो क्लीन द ओरल कैविटी even after each feed by a soft cloth dipped in the warm water. And in terms of Ayurveda, you can also use the Tankana Jala or Godanti Jala, etc. Okay. Now, this is one more important problem of the mother where he says, my baby is very weak. My baby is very weak. सभी माँ को जो है अपना बच्चा weak ही लगता है. That's okay. If the baby is low birth weight, if the baby is premature, definitely it will be weak. You know, it has to pick up now. Okay, compared to the other normal babies, the low birth and the premature babies are definitely weak. Okay, so we have got actually how much time? 1 year of time. The maximum growth recapturing time is 1 year. ठीक है, 1 year में जो है उसका जो भी है वो पिकअप हो जाता है. कुछ बुक्स में 1 to 2 years भी लिखा है. ठीक है. सो एनीवे, सो माई बेबी इज़ वेरी वीक. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम. ठीक है, कि सभी माँ को यही लगता है कि मेरा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए. सो सम टाइम दे विल ऑल्सो दैट मीन्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी. आप बाहर का दूध दे दो तो ये जल्दी बड़ा हो जाएगा. ओके, आप गाय का दूध पिला दो, ये दूध पिला दो. सो दे विल बी कन्फ्यूज बाय दिस. Actually, so but we have got a clear cut explanation that is up to 6 months there should be only exclusive breastfeeding, nothing else. Okay, so now if you go for the top feeding etc, baby can gain the weight. That is because of sodium imbalance and water retention. टॉप फीड में ये प्रॉब्लम होता है, सोडियम का लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है. सोडियम ज़्यादा जाता है बॉडी में तो वाटर रिटेंशन होता है, तो वाटर रिटेंशन के बाद उसको वेट बढ़ रहा है. ठीक है, वो रियल वेट नहीं है, वो रियल वेट नहीं है. ठीक है, बेबी तो देखने में हेफ्टी है और क्या है चब्बी है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द रियल वेट. ओके, compared to the top feed babies, the breast milk babies will have less weight, but it's the right good weight. ठीक है, वो वाटर रिटेंशन वगैरह नहीं है. तो जो इसलिए आप देखे होंगे जो भी टॉप फीड है जिसको भी जल्दी आप टॉप फीड देना शुरू कर देते हैं या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वगैरह जो देना शुरू कर देते हैं, तो यूजुअली वो बच्चे थोड़ा हेफ्टी होते हैं. वो हेफ्टी इसलिए होता है कि इट्स नॉट द रियल वेट. It is because of the sodium imbalance. It's a retention of the water in the body adding to the weight. Okay, this has to be very clearly understood and explained to the mother also. ठीक है, important is don't go for the other breast milk. Although the weight is less, why I'm stressing is mother को तो और कुछ नहीं रहता, वो तो दूसरा बच्चों के साथ कंपेयर करेगी अपने बच्चों को, बोलेगी कि मेरा बच्चा वीक है, बस उसको समझा दो. थिंग इज इन द first 1 year you have to give the breast milk when it is available, because breast milk is always for the brain and cows and others milks are only for the body. तो पूछो मदर से आपको बॉडी बढ़ाना है या ब्रेन बढ़ाना है उसका. ठीक है, so breast milk has got multiple benefits on the brain, so it's a nectar given by the god, therefore it should not be denied, and it is also right of the baby. You cannot deny it. Okay, now sometime
इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ब्रेस्ट फीडिंग बेबी इज नॉट एबल टू गेन द वेट. ठीक है, हमें भी लगता है कि जितना वेट ये गेन होना है उतना गेन नहीं हो रहा है. देयर मे बी सम कॉजेस. ओके, नंबर वन इज फॉल्टी मेथड्स ऑफ फीडिंग. फीडिंग का जो फॉल्टी मेथड्स है, फॉर मिल्क, मिड मिल्क एंड हिंड मिल्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, इफ द मदर इज ओनली गिविंग फॉर मिल्क, ओके, एंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग द ब्रेस्ट विदाउट completely emptifying it, ठीक है, और ओनली गिविंग फॉर 5 minutes, नॉट गिविंग फॉर कंप्लीट 20 minutes एंड ऑल. सो ये सब आता है फॉल्टी मेथड्स ऑफ फीडिंग, नंबर वन. नंबर टू, नॉट कीपिंग द बेबी वार्म. न्यूबॉर्न है, उसको आप ठंड से बचा के वार्म नहीं रख रहे हो. सो दैट आल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ बर्थ वेट, लॉस ऑफ वेट, बिकॉज टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी को मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा. मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर जो मेटाबॉलिज्म होगा, जब एनर्जी बनेगा, एनर्जी के साथ हीट भी प्रोड्यूस होगा, उस हीट से जो है बॉडी का, बच्चे का बॉडी का क्या है, आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा. तो क्या होगा, बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो वेस्ट हो गया. ठीक है, मतलब बच्चा जो भी ले रहा है वो सब उसको हीट प्रोड्यूस करने में ही जा रहा है, तो वेट गेन कैसे होगा. ठीक है, दैट इज अनदर cause if you are not keeping the baby warm. Chance of hidden, sometimes there is a chance of some hidden infections also inside. And again, persistence of the jaundice, hidden infection में से UTI, pyelonephritis, so these are some of the conditions, ठीक है, जो hidden infections होता है. Persistence of the jaundice, for example pathological jaundice अगर कहीं पे है, okay, that is also maybe one of the cause why the baby is not gaining the weight and looking very weak. Okay. This is another condition. Every day at 4 o'clock evening he starts severe crying. सबको पता होगा this condition is called as evening colic. ये एक बहुत टिपिकल कंडीशन है. क्या होता है कि इवनिंग हर दिन जो है 4 बजे के आसपास बच्चा सडनली रोना शुरू कर देता है. 4 बजे के आसपास बच्चा सडनली रोना शुरू कर देता है. इंट्रैक्टेबल क्राइंग रहता है, कुछ भी करो वो कंसोल नहीं होता है. ठीक है, और जो रोने का जो पैटर्न है वो देखने से इट लुक्स लाइक ए एब्डोमिनल कोलिक. ओके, so this is quite common. This is called as evening colic. So parents will be totally confused. Every day at 4 o'clock, एक फिक्स टाइम में, एक आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, उसी टाइम पे बच्चा रोना शुरू करता है. उसके बाद आप कुछ भी करो, वो एंटी क्या है कि स्पास्मोडिक दे दो, कुछ भी दे दो, वो कम नहीं होगा. 2-3 घंटे तक बच्चा लगातार रोएगा और उसके बाद अपने आप वो कम हो जाएगा. ठीक है, और कभी कभी तो क्या है कि जब रोता है तो बच्चा क्या करता है कि और ज़्यादा एयर को कंज्यूम कर लेता है, तो वो एयर वहाँ पे ऐड हो जाता है और कोलिक के पेन बढ़ जाता है. ये विशियस साइकिल और बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इवनिंग कोलिक. ओके, एग्जैक्टली अभी तक जो है कॉन्टेम्परेरी साइंस में नो एग्जैक्ट रीजन इज नोन फॉर दिस. एग्जैक्ट रीजन इज नोन फॉर दिट, बट एवरी डे दिस पर्टिकुलर क्राई स्टार्ट एट द फिक्स्ड टाइम. ओके, by looking at the pattern of the cry, it looks like a colicky pain. Okay, so during the cry again baby is consuming more amount of the air, so it will go into increase the colicky pain further. None of the measures provide the relief. आप कुछ भी करो, उसको hot water fermentation, cold water fermentation, antispasmodics, ये वो सब दे दिया, no. Okay, so what happens is whole families get upset by this. Okay, so usually this type of pattern is commonly seen. Problem is commonly seen in first babies. जो first babies होते हैं उसमें होता है, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होता है. जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होता है. एंटीस्पास्मोडिक ड्रग कुछ रोल मिल सकता है, बट अभी भी वो कंफर्म नहीं है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ दी, एज एज पासेस इट विल गो इनटू सबसेट. नाउ देयर आर डिफरेंट थियरीज फॉर दिस इवनिंग कोलिक. क्यों होता है बोल के बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े जो है पीडियाट्रिशियंस वो अपना अलग अलग राय देते हैं. सो दैट वी विल डिस्कस सम अदर डे. सो बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, इवनिंग कोलिक. समटाइम द टाइम में चेंज, समटाइम इवन नाइट कोलिक भी हो सकता है. कभी कभी रात को 2 बजे उठ के जो है बच्चा रोना शुरू कर देता है, लगातार रो रहा है 2-3 घंटा, कॉज कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इवनिंग कोलिक लाइक ही है, बट वो नाइट में हो रहा है बस. सर ऐसे में अगर पेरेंट्स लेकर आए हैं कि बच्चा रो रहा है या फोन किया है, तो फिर अपन क्या बोलेंगे उसमें? ये है, इसके लिए एक्चुअली 2-3 थियरी से है इसका, ये क्यों होता है बोल के, वो मैं बताता हूँ आपको. और एक तो कोई भी यही करना है हमें कि बच्चे को जो है अटेंशन डाइवर्शन करना है. एक है ना कि बच्चे को कहीं लेके जाओ बाहर, नहीं घूमने के लिए लेके जाओ, जो बाइक राइडिंग में लेके जाओ, या उस स्पॉट से जहाँ पे वो क्राई कर रहा है उस स्पॉट से बच्चे को लेके दूसरा स्पॉट में लेके जाओ कहीं पे भी. ठीक है, वो थोड़ा हेल्प कर सकता है.
और दूसरा एंटीस्पास्मोडिक तो हम देते ही है, वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये क्यों होता है इसके लिए है ना, ये बहुत सारे स्ट्रेस ऑफ द मदर, एक्चुअली एक थियरी ये है कि मदर जो एक्सपीरियंस करती है स्ट्रेस, ठीक है, तो उस स्ट्रेस की वजह से मदर का स्ट्रेस को देख के बच्चा रोना शुरू कर देता है, ये एक थियरी है, ठीक है। बच्चे को पूरा दिन मतलब हैंडल करती रहती है और शाम होते होते हुए है ना वो थक जाती है, ठीक है। और बच्चा इसको अपना एक इनर फीलिंग से जो है ऑब्जर्व करता रहता है अंदर से, ठीक है। तो मदर का स्ट्रेस को फील करते हुए बच्चा इस तरीके से करता है, ये भी एक थियरी है, ठीक है। बहुत रिनोन्ड जो है पीडियाट्रिशियंस है वो इसको मानते हैं। डॉक्टर आमडेकर बोल के है एक बहुत अच्छा जनरल पीडियाट्रिशियन है, ठीक है, डॉक्टर वाई के आमडेकर। सो वो सर का ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो सर का हिसाब से ये है इसका काज, स्ट्रेस ऑफ द मदर, ठीक है। सो एनीवे, this is one important thing. Yes, what is this? When he cries more, he's just like a rope. Yes, what is this condition? Condition is called as breath holding spell, ठीक है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कुछ बच्चों में यही एक प्रॉब्लम है, यूजुअली टिल 6 मंथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, रोते 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 रो जो है माने आपने आया नहीं, 10 सेकंड लेट हो गया बच्चे को पिकअप करने में, और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, रोते रोते जो है सांस रोक लिया, ठीक है, दे स्टॉप द रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड व्हेन द स्टॉप द रेस्पिरेशन एप्टी में चला गया बच्चा, और बच्चा सडनली जो है वो ब्लैंक मतलब एकदम जो है लिम्प हो गया, एकदम रस्सी के जैसा बन गया, ठीक है, एकदम कोई मूवमेंट मतलब ये नहीं है कि रस्सी के जैसा बन गया, एकदम लूज हाइपोटोनिक बन गया। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। एंड द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ दिस इज क्वाइट कॉमन, सभी लोग इसको एक्सपीरियंस किए होंगे कि सडनली बच्चा सांस रोक लेता है, सांस रोक लेता है, और तो कभी कभी तो ब्लूइश डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है, साइनोसिस आ जाता है, उसके बाद थोड़ा देर के बाद ब्रैडिकार्डिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है मदर के लिए, ठीक है, या पेरेंट्स के लिए। सो व्हाट इज द कॉज? अगेन द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। बेबी गेट्स इरिटेटेड फॉर ए सिंपल मैटर एंड स्टार्ट क्राइंग एंड इट वांट ए इमीडिएट रिलीफ। अगर आप आने पे 10 सेकंड भी लेट हो गया तो तुरंत ये पीक में पकड़ लिया और रोते रोते ऐसा करते वो जो है सांस रोक लेता है, ठीक है। सो नाउ दिस कैन बी वेरी वेल हैंडल्ड। इसलिए क्या है कि इमीडिएटली यू गिव द काउंटर स्टिमुलेशन, जैसा ये बच्चा करता है सांस रोक लेता है, कोई ना कोई एक काउंटर स्टिमुलेशन दे दो। एक तो छाटा मारो मतलब कहाँ पे, यहाँ पे चेहरे पे नहीं है, बटक एरिया में एक मारो, ठीक है, दैट्स वन थिंग। और सोल एरिया को जो है ज़्यादा रब करो, काउंटर स्टिमुलेशन देना है। या गर्म पानी है तो थोड़ा बहुत गर्म पानी डाल दो, या कोल्ड पानी है तो कोल्ड पानी डाल दो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सडनली कोई ना कोई एक स्टिमुलेशन देना है, सो दैट इट ब्रिंग बैक द ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। सो अगर अब थोड़ा गांव से अगर है तो यूजुअली हमारा दादी नानी सब क्या करते थे, जब कोई बच्चा गिरता है, गिर के रोना शुरू करता है, तो वो जाके एक और मारते हैं बच्चे को। आप ऑब्जर्व किए होंगे, पहले तो एक मारते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना ये ब्रेथ होल्डिंग में ना जाए, ठीक है। रोना तो शुरू कर दिया उसने, गिर के दर्द हो गया, तो अभी तो रोएगा ही जोर से, रोते रोते कहीं सांस ना रोके, इसलिए वो क्या करते हैं, एक और मारते हैं, तब बच्चा शांत हो जाता है। शांत मतलब ये नहीं होता है कि ब्रेथ होल्डिंग नहीं होता है। सो दैट इज वन ऑफ द सिंपल टेक्निक्स फॉलोड बाय आवर एंसेस्टर्स, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया कभी इसको गांव में? यस सर। सो नाउ दैट इज क्या है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में एक और चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज साइनोसिस आता है। कभी कभी ब्रेथ होल्डिंग होते ही जो है वहाँ पे साइनोसिस आ जाता है। सो एज देयर इज साइनोसिस डेवलपिंग, वी हैव टू रूल आउट कॉन्जेनिटल कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी ब्रेथ होल्डिंग्स का जो बच्चा है वहाँ पे हमेशा कॉन्जेनिटल कार्डियक प्रॉब्लम को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। नो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में डिफरेंट टाइप्स है, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करता हूँ, ठीक है। एनीमिया के वजह से जो एक होता है, और ये एक ऐसी ब्रेथ होल्डिंग होता है जो एनीमिया के वजह से कभी भी जो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है, वो कभी कभी सीजर जैसा दिखता है, ठीक है। एंड दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज वी विल डिविएट फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन आयरन लाइक प्रिपरेशंस आर गुड। अगर एनीमिया के वजह से जो है ये हो रहा है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, देन एनीमिया का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कोई भी आयरन ट्रीटमेंट इज गुड,
ओके, कैन गो फॉर दात्रे लोहा एंड लोहासा, सो मेनी जो भी है हमारा वो भी अच्छा काम करेगा। एनीमिया करेक्शन होते ही जो है ये सही हो जाएगा। यूजुअली सच एनीमिया की वजह से जो होने वाला जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है वो 6 महीने के बाद भी परसिस्ट करेगा, बट वो जो फिजियोलॉजिकल जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है जो नॉर्मली होता है वो यूजुअली 6 महीने के बाद यूजुअली नहीं रहता है। एंड इस टाइप के जो बच्चे हैं जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में जाते हैं यूजुअली आगे जा करके थोड़ा बहुत, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है बच्चे को, आगे जा करके थोड़ा टेम्पर टैंट्रम बोलते हैं वो डेवलप होता है, और टेम्पर टैंट्रम भी अगर कम नहीं होगा अपना टाइम पे, सो देन इट मे लीड टू सम, इस टाइप के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं या जिद्दी होते हैं, ठीक है। सो आगे जा करके भी थोड़ा ADHD ऐसे जो कंडीशन है होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये नहीं बोल सकते कि इट हैपेंस इन ईच एंड एवरी किड, ठीक है, बट ये इंसिडेंट्स वाइज ये बोलता है। Another important complaint of the mother is he is always sleeping, बच्चा हमेशा सो रहा है, ठीक है, बच्चा हमेशा सो रहा है, दिस इज अनदर कंप्लेंट। सो ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, मे बी एक्सेसिव स्लीप, ठीक है। सो दे यूज टू क्लोज, न्यूबॉर्न बच्चा यूजुअली पैदा होते ही जो है मदर का कंप्लेंट है मेरा बच्चा आंख ही ओपन नहीं करता, ये हमेशा सोता रहता है, ठीक है। हाँ बच्चा आंख तो क्लोज कर रहा है बट वो सो नहीं रहा है। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल फोटोफोबिया, पता होगा आपको। What do you mean by physiological photophobia? For the first 48 hours or up to sometime 3-4 days, usually newborn baby will not open the eyes on light. जब भी लाइट है तो वो ओपन नहीं करेगा, डार्क में ओपन करेगा। अगेन दिस इज गिफ्ट ऑफ द गॉड गिफ्ट है, क्योंकि अगर ओपन किया तो उसका रेटिना वगैरह डैमेज होने का चांस है, क्योंकि वो डेवलप नहीं हुआ अभी भी, इसलिए बेबी यूज टू कीप क्लोज, दिस इज कॉल्ड एज कीप क्लोज हिज आइज ऑन अगेंस्ट द लाइट। This is called as physiological photophobia and this is considered as good for the baby. Okay, so usually mother confuse this as a baby sleeping, और वो बोल सकती है बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, ठीक है। Then another condition is mother says that after few sucking my baby goes to the sleep, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा बच्चा दूध पीता है और उसके बाद ये सो जाता है, तो उस टाइम में मदर को वापस उठा के उसको पिलाना पड़ेगा। अगेन मदर हैज़ टू गिव द माइल्ड स्ट्रोक्स ओवर द पाम एरिया or trickle the palm area and he has to awake the baby and then he has to continue the feeding. Okay, so usually this happens, बच्चा थक जाता है, ठीक है। But if this very frequently happening with the dyspnea-like condition, breath holding, dyspnea-like condition, then again you have to think about congenital cardiac problems, suck rest cycles, सुने होंगे अपना आप suck rest cycle, थोड़ा बहुत 5 मिनट सक किया, उसको सांस आना शुरू हो गया, वापस छोड़ दिया, 5 मिनट के वापस शुरू कर दिया। So this suck rest cycle is very characteristic of some of the cardiac involvement. Congenital cardiac problem should be immediately tested. Okay, so this is how. Sometime mother taking some of the sedative drugs, ठीक है, so that may pass through the breast milk to some extent and baby consuming the breast milk may have the deep sleep, ठीक है। So that's one of the very important cause. Now my male child baby is having enlargement of the breast, ये भी एक और प्रॉब्लम है। मैंने बताया ट्रांसप्लासेंटल transportation of the maternal hormones into the baby's body may lead to some of the hormonal changes in the baby for a time being, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लेसेंटल डिलीवरी का टाइम में क्या, प्लेसेंटा का थ्रू जो है डिलीवरी के जस्ट पहले क्या हुआ कि मदर का बॉडी का कुछ हार्मोन्स बच्चे के बॉडी में आ गए, और उसके बाद 1-2 घंटे में जो है बच्चा डिलीवरी होकर बाहर आ गया, अब वो हार्मोन बॉडी बच्चे के बॉडी में रह गया, वो हार्मोन जो है बच्चे के बॉडी में भी अपना काम दिखाएगा, ठीक है। सो इफ इट इज़ some of the prolactin etc hormones which is given from the mother to the baby, and in the baby's body it may lead to enlargement of the breast, ठीक है। सो मेल बेबी में इस तरीके से जब enlargement of the breast होता है, इट्स कॉल्ड एज mastitis neonatal. Okay, so mother will be worried. Okay, similarly in the female baby when this some of the hormones of the mother may come and it may lead to a menstrual like flow, menstrual like bleeding भी हो सकता है कभी कभी, बट ऑल दिस आर वेरी ट्रांसिएंट, 1-2-3 दिन में सब सही होने वाला। हार्मोन कंटिन्यूसली थोड़ी आ रहा है, जो आया है वही हार्मोन काम कर रहा है, 2-3 दिन के बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। दिस इज अगेन फिजियोलॉजिकल। सो ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज mastitis neonatal. There may be transplacental passage of the hormones and do not give any drugs like metoclopramide to the baby, it will go into aggravate, ठीक है। and do not try to squeeze the breast. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गया, ये मेल बच्चा है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्या है, उसको स्क्वीज मत करो। ओके, इफ पॉसिबल जस्ट गिव द लोकल फॉर्मेंटेशन, हॉट फॉर्मेंटेशन दे दो उसको, पटस्वेदा या हस्तस्वेदा या जो भी है, सो दैट इज सफिशिएंट। माइल्ड मसाज फॉलोड बाई द स्वेदना, दैट इज सफिशिएंट, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। अगेन दिस इज ए physiological condition. Similarly,
there is one more condition, vaginal bleeding भी हो सकता है, बच्चे को vaginal bleeding भी हो सकता है. Again, this is because of the transplacental passage of the hormones. Okay. White discharge भी हो सकता है sometime. White discharge. White discharge maybe also that is also because of this transplacental hormones. So these are the three important things that you have to remember. Enlargement of the breast in the male baby, or sometime even in the female baby. फीमेल बेबी है तो मदर इतना ज़्यादा वरी नहीं करेगी, बट मेल बच्चा है तो बहुत ज़्यादा वरी करेगी. एंड देन वेजिनल ब्लीडिंग, देन white discharge. So these are the three problems which are just occurring because of transplacental passage of some of the hormones of the mother to the baby, and it will go into subside by 2 to 3 days. Now we go into another cause, that is why head is enlarged or head is elongated. This is one more problem. I think that we will continue in the next class.